Hey all beautiful people, I am Usmaja Srivastav and welcome to my YouTube channel. Today I am going to show you all my lipstick collection or some of the affordable lipsticks that I own. This is going to be super affordable and you might see some of the lipsticks of a particular brand. So if you are interested in that brand and you want swatches, you can surely watch this video. And I own such affordable lipsticks that are nearly under rupees 300 and also some of the lipsticks that are at high end under rupees 6 or 700. उससे ज़्यादा इस वीडियो में we are not going to cover cause this video itself is a video that has affordable lipstick collection. So without further ado, let's get started. Let's get started with the very first lipstick and my favorite brand's lipstick. This is a lipstick from Mars Cosmetics. This one is a very beautiful brown kind of shade. See, I have used it so much that it shows now. Feels very neutral on my lips. This lipstick is in the shade Girl Part 10. If you are unaware of the brand Mars Cosmetics lipsticks, you are missing out on something because इसके लिपस्टिक्स आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल फॉर्मुलेटेड और ये इनका क्रेयॉन लिपस्टिक है एंड ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू मेंशन द प्राइस ऑफ ईच लिपस्टिक एंड पुट द लिंक्स ऑफ द लिपस्टिक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू शुड चेक इट आउट if you need any of these lipsticks. Coming to the lipstick, let me put it and show you all. This is how the lipstick looks on me. It looks like a very brown and orangish kind of shade, but when I use it with a lip liner, it obviously looks very beautiful, but it never washes me out as I put makeup. And I love this lipstick. Iska formula is very creamy and ultimately I am a very matte kind of girly. I do not like a lot of glossiness on my lips, so this really gives a very matte finish. When it dries, it doesn't really feel dry to your lips and it barely transfers. I mean, it obviously is a very brown girl friendly lipstick. I mean, someone around my tone and undertone can really use it, and I mean, brown lipsticks are in trend and you can surely go for this if you are a sucker for brown lipsticks like me. Coming to the next lipstick, this lipstick is from the brand Swiss Beauty. Again, one of my favorite affordable lipstick brands. This is their ultra smooth liquid matte lipsticks. Again, a matte lipstick that I am very inclined towards. This is their pink kind of shade and this is in the shade 27 Nude Bomb. And I really like this lipstick, though it does not go with my undertone and skin tone very well, but whenever I use it as a base and as with a lip liner, it really gives me a very nude and matte kind of shade. I am obviously going to put it on my skin tone and show you all, क्योंकि I never use lipsticks like एक lipstick लगा लिया and हो गया. No, I am not one of them. I obviously go for 2 or 3 lipsticks and a lip liner so that it really gives you a perfect color that you want, that matches your outfit or the matches your vibe. मतलब आप थोड़ा सा भी लगाओगे इसे तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ पे ऑफ एंड मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा फ्लैटरिंग नहीं लगता फिलहाल, बट व्हेन इट ड्राइज अप, जैसे मैं इसे किसी लिप लाइनर के साथ या व्हेन आई पेयर, ऑब्वियसली इफ यू हैवंट सीन माय शॉर्ट, आई हैव मेड a video that is my favorite lip combo and I have used this Swiss Beauty's pink lipstick and this Mars Cosmetics lipstick and a lip liner, and that is my favorite lip combo currently, and it looks very beautiful, like very nude and very daily wear color. Like, see, when it dries, it gives you a very beautiful yet very subtle pink color, and
I love this. Obviously, this is the most affordable lipstick, and I have a lot of Swiss Beauty's lipstick. Swiss Beauty, if you are somehow watching it, obviously send me these lipsticks. And मतलब transfer, no transfer at all. When it dries up, it doesn't transfer really. And मुझे ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होता कि it dries your lips or something, क्योंकि इस प्राइस में the lipstick that gives you a great color that doesn't really dries your lips and is obviously transfer proof. I mean, what else do you need? Coming to the next lipstick of the collection, this is the Matte Look Parlast Crayon, and I don't know if you have heard about this brand or not. और मैंने इसे इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है कि अब ये शायद ऐसा बचा भी नहीं है, बस इतना सा ही बचा है. बट आई थॉट वाई नॉट शो यू टू यू ऑल. मतलब ये बहुत ही रैंडम परचेज था और मैंने सोचा वाई नॉट ट्राई इट. यू गेट लाइक अ sharpener. I got it from my mother, but ये मैंने अपने पास रख लिया. This is in a very like dark pink color, I guess, और क्या ही बोलते हैं जो भी, but this is a nice color. This is how it looks when on my lips. Like you can use this for a very bright pink color. जनरली मैं इसे ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ. आई मिक्स इट ऑल्सो, ऑब्वियसली आई मिक्स इट. बट ऐसे भी इफ़ यू आर वेयरिंग समथिंग लाइक अ न्यूट्रल कलर और समथिंग इन दिस कलर, इट रियली कॉम्प्लीमेंट्स. ऑल्सो आई हैव गॉट अ बंच ऑफ रेड लिपस्टिक्स, जो कि मैं वैसे भी यूज़ बहुत कम करती हूँ. बट वेन यू यूज़ इट विथ ब्राउन्स और न्यूट्रल शेड्स, तो ये बहुत ही अच्छा ऐसा मिक्स ऑफ कलर देता है. इसलिए मैं ऐसा रेड लिपस्टिक रखती हूँ ताकि यू कैन यूज़ इट for occasions like when you are wearing something bright colors and you want your lips to be bold. So next lipstick I have this Swiss Beauty's matte lipstick again. This is in the shade wine red और मुझे ये लिपस्टिक ऐसे फ्री में मिली थी, इसलिए आई हैव दिस लिपस्टिक. बट अगेन फॉर्मुलेशन और ट्रांसफ़र प्रूफ जो हमने पिंक लिपस्टिक में देखा था, इट इज़ द सेम कॉज दिस आर द सेम लिपस्टिक्स, जस्ट द शेड इज़ डिफरेंट. आई एम ऑब्वियसली गोइंग टू शो यू ऑल. इट समवॉट लुक्स लाइक दिस. वेट टिल इट dries. I know it looks very shadak, but wait till it dries. Like someone who is a little lighter to my tone and in a neutral undertone, this will suit you very well. See, it ultimately like changes color when it dries up, right? Like Swiss Beauty के ये वाला range that is their liquid matte lipstick range, it really changes color when it dries up, and it looks nice with the whole outfit, right? I like it. मैंने इसे बहुत कम ऐसे डायरेक्टली लगाया है like this lipstick alone, and जब आज लगाया it really compliments, right? It looks nice. I was very skeptical using this lipstick all alone. Do comment and tell me how you like this or not, cause मुझे अच्छा लग रहा है ये. Like being so bold, it transfers none. Bold red lipstick that doesn't transfer and is so affordable. You can surely go for it. Now coming to the next lipstick, this सब गाड़ियों को अभी आना है, सब गाड़ियों को अभी जाना है, सब गाड़ियों को अभी बैक करना है. आधे घंटे से म्यूजिक बज रहा है. Struggles of being a creator. I guess we should do all the red lipsticks in a series, I guess, so that if you want red lipstick, तो मैं time tag डाल दूंगी. You can just skip to the red lipstick part, and if you don't want to see any red lipstick, you can surely skip this. But I guess you should watch it, क्योंकि girls with bold red lips are, I know ज़माना न्यूड का है. वी ऑल लव सटल एंड ब्राउन्स एंड न्यूड्स,
but the bold red lip trend never fades, I guess. So the next red lipstick that we have is from the brand Nykaa itself. This red lipstick is from Nykaa and it is their bullet lipstick and it is in the shade Bon Appetit Baby. Nykaa lipsticks are very creamy and मुझे ऐसा लगता है कि ये शेड मेरे लिए बिल्कुल नहीं बना था, बट दिस इज़ द फर्स्ट लिपस्टिक फ्रॉम नायका जो मैंने लिया था और उसके अलावा मैंने कोई ऐसा नायका का लिपस्टिक ट्राई नहीं किया है. इफ़ यू वांट मी टू ट्राई एंड इफ़ यू हैव सम सजेशंस कि नायका के और कौन से लिपस्टिक्स अच्छे हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन. दिस इज सो क्रीमी, लाइक दिस इज नॉट वेरी मैट एंड दिस इज वेरी लाइक हाइड्रेटिंग. मतलब आई डोंट नो हाइड्रेटिंग बोलना चाहिए नहीं, बट ये ऐसा मैट फिनिश नहीं दे रहा है. इट इज़ गिविंग लाइक ग्लॉसी फिनिश, आई डोंट नो, बट ये ऐसा ब्रिक रेड सा कलर है. लाइक इफ़ यू वांट अ सटल रेड, नॉट वेरी बोल्ड, you can surely go for it. If you want to use red lipsticks for a daily use, this is nice. Obviously price mention कर दूंगी. It does transfer a little. Next lipstick we have is from Sugar Cosmetics. I know थोड़ा सा high end product है and this is their matte attack transfer proof lipstick. और इसे भी मैंने इतना यूज़ कर लिया है कि ये बचा नहीं है बहुत ज़्यादा, बट आई वॉन्टेड टू शो यू ऑल कि दिस इज़ इन माई कलेक्शन. दिस इज़ वेरी लाइक मरून प्लस रेड काइंड ऑफ शेड और मैंने इसे हर तरीके से यूज़ किया है, लाइक फॉर द ब्लशेस एंड वॉट नॉट. लाइक शुगर के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैंने इसे यूज़ नहीं किए हैं. आई हैव दिस लिपस्टिक ओनली. आई होप ऑल यू गर्ल्स अंडरस्टैंड कि इसे जो पाउडरी काइंड ऑफ फिनिश ऐसा होता है, इट गिव्स लाइक दैट. एंड थोड़ा सा हाई एंड के हिसाब से आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दिस प्रोडक्ट क्योंकि इतने में यू आर ऑब्वियसली गेटिंग वेरी नाइस शेड्स इन अदर ब्रांड्स ऑल्सो. दिस इज इन द शेड 04 मरून वाइब. थोड़ा सा ट्रांसफर कर रहा है. फॉर द नेक्स्ट लिपस्टिक वी हैव दिस लिपस्टिक फ्रॉम Maybelline and this is their pink kind of shade lipstick. This is their bullet lipstick and it is in the shade Touch of Spice 660. I was very skeptical about this shade क्योंकि ये बिल्कुल भी मेरे अंडरटोन के साथ जाता नहीं है, बट लाइक बहुत ज़्यादा मैंने इसे ऐसे यूज़ नहीं किया, बट आई यूज इट ब्यूटिफुली वेन एवर आई यूज टू मैटिफाई न्यूड समथिंग, क्योंकि it obviously doesn't go very well with my undertone, but a subtle flush of color with a lip liner and something brown, it works beautifully क्योंकि ये इसका formula is very beautiful, like very very beautiful. See, this feels like butter and the packaging and everything is so chic and beautiful. If you are someone lighter to my shade and you are in a neutral undertone, please go for it. This will give you very beautiful pink kind of color. Like ऐसे भी ये अच्छा ही लगता है, but like lip liner और किसी brown shade के साथ it is nice क्योंकि it obviously doesn't feel like very heavy and feels like butter on your lips. And like very nice packaging and छोटू सा है. You can just keep it in your bag for touch ups. It will work nice. मतलब इतना भी बुरा नहीं लगता मुझ पे. Coming to the next lipstick, which is obviously my favorite from Mars Cosmetics, and this is not really like a lipstick, but it is from their Lip Drip Mist range. Like it is a tint kind of, like it leaves you a stain on your lips when used. This is in their shade 05 Cranberry Drip. मतलब अगर आपको इसके और भी शेड्स लेने हो, दे आर वेरी ब्यूटिफुल, बट आई हैड लॉट्स ऑफ ब्राउन्स एंड ऑल, सो मैंने ऑप्ट किया फॉर दिस पिंक शेड, लाइक अ क्रैनबेरी शेड. ऑल्सो आई एम सो इम्प्रेस्ड विद दिस प्रोडक्ट. आई एम ऑब्वियसली गोइंग टू ऑर्डर अदर शेड्स एज वेल. इफ यू वॉन्ट अ हॉल और अ swatches of those lipstick or this mist kind of lipstick from Mars that are other shades as well, I'll do it. Comment. मतलब
कमेंट करो तो पता चले व्हाट यू वांट। लाइक मेरे पास जितने भी लिपस्टिक है सब लिपस्टिक्स में से आई लव दिस पैकेजिंग। मतलब इसकी पैकेजिंग इज सो शीक and their transparent wand. I adore it like this. Like for a daily use and a gloss like formulation, it is very nice and it never feels heavy and it looks cute. Like daily use ke liye you can obviously go for it, and let me show you by removing it. It leaves a very nice stain. See, आई फॉरगॉट कि मेरे पास एक और लिपस्टिक है और मुझे इसे लास्ट में यूज़ करना था। बट हाउ कैन आई फॉरगेट द लास्ट लिपस्टिक? I waited it for so long. This is the most viral and very trending product from this brand, and it was out of stock everywhere, like in Nykaa, their own website, in Amazon, and Purple, everywhere it was out of stock. But I got it from Amazon. My sister just ordered it for me तुरंत ही जैसे ये इन स्टॉक इन हुआ। इफ़ यू नो द हाइप अबाउट दिस प्रोडक्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्स मैट म्यूज लिपस्टिक। आई फाइनली गॉट इट। मतलब मैं इतनी स्केप्टिकल किसी लिपस्टिक के बारे में नहीं हूँ जितना इसके बारे में हूँ, क्योंकि इट वॉज सो ऑन इंटरनेट। आई रियली वॉन्टेड टू नो वॉट वॉज द हाइप अबाउट इट। लुक एट दिस, आई मीन इतनी सुंदर, इतनी शीक पैकेजिंग, सो ब्यूटिफुल। मतलब मैंने इसे खोला भी नहीं, इसे देखा भी नहीं, पैकेजिंग से ही अश्मिता स्टॉप। I have ordered this in the shade 04 Trendsetter. This is a brown kind of shade. Again the transparent wand. ये बहुत ही अलग सा नहीं लग रहा? See? Let's try it. It feels so different. बहुत ही अलग सा पाउडरी सा लग रहा है कुछ तो। It is so like mousse, like literally it is a mousse lipstick, and I think the shade is quite nice. Like I wanted a proper brown lipstick, and with a lip liner it will look very very amazing. And I love the formulation. बहुत ही ऐसा literally mousse like blurring effect it gives. See, and it feels very different on the lips. बहुत ही अच्छा अलग सा लग रहा है, क्योंकि I have been from the start of the video I have been into reds and pinks, and now this is a proper brown lipstick. I don't know, but मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा ब्राउन सा लिपस्टिक चाहिए ही था। And see, in sunlight it looks so beautiful. I love it. Well, coming to the video, I love this. It was a great purchase. I got it for $279 or $289 something. I'll mention the price and the link in the description. But it feels so nice. It does transfer. I already knew it, क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज़ में मैंने देखा था कि does transfer, but it is nice. It is not very transfer proof, but I love the color. You can go it with your bold looks, like a bold eye, and like with a bold brown eye and some brown outfits. Like it will complement you so well. And इसके और भी shades are very beautiful. You can surely try it. Like it is not very prominent on my lips, but also it is not washing me off. कैसे बताऊँ? I really like the formulation. मतलब बहुत ही ऐसा blurring सा effect लग रहा है। Well, this was it for the video. I hope you liked the lipsticks in this collection, and if you want me to show more of the lipsticks other than this, I'll surely make a video. But for the affordable side, these lipsticks are really nice. If you want any of the lipsticks from this collection, I am obviously going to link it in the description. Do check the description, and please tell me if you like any of a particular shade of any lipstick. I love listening to you in the comment section. Well, that was it for the video. I'll meet you in some other video. Till then, take care. Bye.